Ladies and gentlemen, we are at the Garden City, and which one is that? Bengaluru. And when we talk about luxury, यहाँ पे ये लोग ने डिफाइन ही कर दिया अलग से luxury का मतलब क्या होता है. Ladies and gentlemen, the developer name is Phoenix, and we are at Kasaku. Kasaku का मतलब पता है क्या आपको? नहीं? गूगल करना है. Not required. Ladies and gentlemen, it means masterpiece. And trust me, when they have said it is a masterpiece, it is. अभी हाँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप तो हमको बिलीव नहीं करोगे. As I always say, seeing is believing. So, ladies and gentlemen, we are at an apartment here. This is 8046 square feet. तो देखना है क्या? Come, please follow me. So, ladies and gentlemen, we are at the entrance now, and this apartment is 8049 square feet. मैंने गलती से 46 बोल दिया है. Apologies, इंसान हो भाई, होता है गलती. But nevertheless, I will show you something which is really very unique. These are the passenger elevators, और this is only one flat per floor. ये आप ही का जगह है. So ये common lobby है. If you see, this entire thing can be beautified by you. That is the fire exit. उसको आप हाथ नहीं लगा सकते. But if you see here, आप अच्छा से अपना interiors कर सकते हैं. So as we enter, so Mother Earth का theme है. If you can see the flooring, it's completely unique, completely different. आपको ये जो दिख रहा है वो भी मिल सकता है, और इफ यू वांट अ बेड शेयर अपार्टमेंट, दैट आल्सो ऑप्शन वी कैन वर्क इट आउट. यहाँ पे 5 टाइप के ऑप्शंस हैं दैट वी विल डिस्कस इन पर्सन, बट टुडे आई जस्ट वांट टू शो यू द अपार्टमेंट. इट्स ब्यूटीफुल. सो लेट्स स्टार्ट विद द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया. सो दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द लिविंग एरिया. इट्स रियली वेरी mammoth. And many times when we throw parties, younger generation can have the separate space here, the adda zone as we call it, and this will also be named as the den area. So ये एक partition है यहाँ पे, आप इसको आराम से टान सकते हो, and it's a good enough size, The best part again, ladies and gentlemen, come here, let me show you something. If you really want to have parties and all that, आपको outdoor space चाहिए. आपको बाहर जाने का जरूरत है ही नहीं. क्यों नहीं है? Because just look at this. It's really very big. End to end, if I can just show you from that side to this side, काफी जगह है यहाँ पे. And the best part is the view. Let me just show you around. It's basically the internal complex view. We are standing on 17 acres. That is the clubhouse in front. You've got different amenities. So let's head back. और यहाँ पे भी there is an option if you want to have parties and all that. You need counters over here. सब provision किया हुआ है. You can have your sitting area here. So let me just remind you, ये सब flat में नहीं मिलेगा. This is just for visual representation. If you need similar things, obviously we can always discuss that. So this in front is your dining area. यहाँ पे अलग से एक portion दिया गया है. Probably you can convert this into your bar if you wish to. अगर नहीं चाहिए तो no problem at all. This is just to give you a brief idea of what all you can do with this space. It's really very mammoth, and which is why you can utilize this. The best part again, मैं कितनी बार बोलूँ कितना अच्छा चीज़ है ये फ्लैट में. I just need to keep repeating that. The cross ventilation. So if you just open this up, breeze is there, and if you open that up, continuous आपका air circulation रहेगा. This is another internal view of this complex. You can see the swimming pool and the garden here. World Trade Center is just here. That is your Orion Mall, and that is your Sheraton Hotel. It's in one of the premium localities of Bengaluru. So now let's start with the bedrooms. This is a foyer area when you enter your bedroom, and you got your wardrobe just behind. It's a very good size bedroom, ladies and gentlemen. You have a walk-in closet also separately over here. You got your attached washroom. You have your attached balcony. It's all premium. I just don't need to harp on that. This is the walk-in closet here. And just to give you an idea on the wardrobe, wall to wall you can do similar things. इसके साथ आपका एक balcony भी है, which is attached, and that overlooks the internal garden. You got your tennis court and other things over here. So ये हुआ bedroom number 1. So let's head to the second one. Now there is this interesting concept जो कोविड के टाइम पे सिखाया गया है कि घर के अंदर एक ऑफिस होना चाहिए. So ladies and gentlemen, we've converted this into an office. Should you require to convert this into a bedroom, you're always free to do that. But
ये घर के अंदर ये होना चाहिए। बेडरूम आप इसलिए कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज इसके साथ एक अटैच्ड वॉशरूम भी है। तो ये टेक्निकली आपका हो गया फिफ्थ बेडरूम। बट वी आर हियर शोइंग यू 4 luxury bedroom. This is the office space over here. It's equally large in size. The view is very nice. Attached washroom भी है इसके अंदर. So let me show you that as well. So this is your bed, and after that, if you see, there's ample of space for your sofa and ample of space for your wardrobe. अगर ये आपको लग रहा है ये छोटा है, आप उसको लंबा कर सकते हो. Provision is always there. So कितने हुए? 2 bedroom और 1 office. Now we'll head to the third one. Please come. ये भी इंटरनल व्यू है. इट्स रियली वेरी नाइसली डन. द साइज इज रियली वेरी बिग. क्या साइज अगर है तो आप हमको कमेंट कीजिए. वी विल लेट यू नो द साइजेस. दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम. So this is the common washroom over here for your guests. This is the master bedroom. So in this flat there are 2 master bedrooms. So यहाँ पे एक अच्छा एक यूनिक चीज दिया गया है. You know, so I'm sure you have these small little fights between husband and wife. So you know, I want to use this, I want to use that. The developer is really very intelligent these days. You know, so what they have done is they have done it separately for hers and for his. अलग से आपका wardrobe space दिया गया है. The bedroom size probably in my humble knowledge is somewhere around 22 to 15. Not sure on that for this particular one, but I'll check and I'll let you know. Just to give you an idea of the size, it's big. इसके साथ आपका balcony भी है and attached washroom भी है. So I'll just give you a little brief on this. बेडरूम साइज इज बिग और ऐसे टाइप के आपका 2 बेडरूम साइजेस हैं. सो नाउ वी आर हेडिंग बैक. अभी इंपॉर्टेंट जगह रह गया है, दैट इज द किचन. सो लेट मी जस्ट शो दिस टू यू. आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा. अदरवाइज वी नॉट नो. हमेशा पीपल हु आर यूजिंग द किचन ऑलवेज से दे फ्लैट बड़े देते हैं, आप किचन साइजेस छोटे देते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? It's a very good size kitchen, ladies and gentlemen. And यहाँ पे एक अलग से एक जगह दिया गया है for your storage purposes. यहाँ पे तो ample of space है ही, plus it gives you more space, more room to keep more stuff over there. So we'll head back. That is your utility balcony here. अब यूटिलिटी बालकनी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत महत्व आदमी का या औरत का ये स्थान है. वो कौन सा है? The domestic help. Without that, it's quite difficult, you know, to run the house. So this is the space for the servants' quarters. It also has an attached washroom. And आप सोच लीजिए you're traveling somewhere on a vacation or somewhere, तो access आपका डोमेस्टिक हेल्प का रिस्ट्रिक्टेड रहेगा किचन तक, बिकॉज वो खाना बना के अपना काम कर सकते हैं. एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द आउटडोर एंट्री एंड आउटडोर फॉर द सर्विस क्वार्टर्स जो बाहर जाता है. सो फ्लैट के साथ ये वाला डोर कनेक्ट नहीं है, बाहर में इजीली दैट पर्सन कैन गो. सो अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सिनॉप्सिस ऑफ द फ्लैट. कमिंग बैक टू द किचन. So, ladies and gentlemen, this is 8,000 plus square feet, 4 BHK plus your office plus your study and other things. कैसा लग रहा है आपको? प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा. If you think that you want luxury or if you think that your family deserves luxury, हम काम करते ही क्यों है? Why do we earn? So that we get the comfort. In today's era, अगर आपको comfort नहीं मिल रहा है, then you are not living it up. Your favorite realtor Juicer from Bakala Properties is always there to assist you. और ये flat, if you ask me the price, it starts with 27 crores. ये मैं बोल रहा हूँ बेयर शेल का.
देर आर वेरियस अदर ऑप्शंस ऑफ इंटीरियर, मिक्स एंड मैच हम कर देंगे. इफ यू थिंक that we can have a talk, we can have a look at the premise, then do give me a call. ये अपॉर्चुनिटी मत मिस कीजिएगा. बहुत बार आई एम श्योर आपके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में आप सोच रहे होंगे यार वो टाइम पे अगर वो कॉल लिया होता तो आज हम लोग सुखी रहते. आज है वो दिन. yesterday was the day actually, but you have already missed it. अगर आज मिस करेंगे तो I don't know what to say. नंबर अगर नहीं है, again note it, 9836527860. We are always there to assist you. Namaste.